I'll meet tomorrow. So yes, I will. And number B. Will Robert go to class Good. tonight? Will Robert go to class tonight? No, he won't. नो ही वोंट, नहीं वही नहीं जाएगा। इसी तरह वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेल टुडे एंड पर्टिकुलरली द क्वेश्चन सेंटेंसेस इन वेल. Already we talked about the positive and negative structure of will. The positive structure is the subject first of all we use, after subject then we use will, and after will verb first form, and then rest of the sentence. फॉर एग्जाम्पल वील गो टू स्कूल टमारो, हम कल स्कूल जाएंगे, और वेल का कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है? एल. एल डब्ल्यू की जगह फिर आप पास डब्ल्यू और आई की जगह आप पास ट्रॉपी लिख लेंगे और फिर एल लगाएंगे. सो एल. Similarly, he'll recite the Holy Quran, she'll take tea, they'll offer the prayer, right? और जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट और फिर won't. Will not का contraction form क्या है? Won't. It actually this is the contraction form of will not. So will not, won't. Willn't न कहेंगे, we shouldn't say willn't, it's a won't. And then again base form of verb or first form of verb, and then rest of the sentence we will use. For example, हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, we won't waste the time, they won't smoke cigarette, he won't be rude to his parent, वो अपने वालिदैन से गुस्ताख नहीं होंगे. So won't कहेंगे. For negative sentences we use won't, राइट. और पॉजिटिव के लिए एल या वेल. और जब क्वेश्चन सेंटेंस हो तो यही वेल जो ऑक्सिलरी वर्ब है वी विल यूज इट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट मीन फाइल. अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लो, विल यू गो टू स्कूल टमारो, कल येस, येस आई विल, या येस वी विल, हम जाएंगे. यू आर मोर देन वन, सो यू विल से येस वी विल. Similarly, will you recite the Holy Quran tomorrow morning? Yes. Yes, we will. Will you take tea in the morning tomorrow? Yes, we will. Yes, we will. Good. Will you offer the prayer today? Yes. Yes, we will. Yes, I will. Right. और अगर मैं ये कहूँ, will you waste your time in future? No, we won't. No, we won't. Will Bilal smoke cigarette tomorrow? No, नो ही वोंट. बिलाल है तो ही कहेंगे इसके लिए, राइट. वेल आयशा बी रूड टू हिज मदर, आयशा अपने माँ के साथ गुस्ताखी करेगी? नो शी वोंट. यस, यस के साथ वेल और नो के साथ वोंट लगाएंगे जब हम कोई काम नहीं करेंगे. एंड यूजुअली इन द फ्यूचर टेंस फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन इज गिवन, टमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द डे आफ्टर टमारो, राइट. टनाइट, आज रात, जो आने वाली रात है. सो विद ऑल ऑफ देम वी यूज द फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन विद द फ्यूचर टेंस, राइट. हियर देयर आर सम exercises in the book, so let's do it also. Let's do the example first. I'll ask the question, you will answer me. Will your friend visit you next year? Yes, they will. Good, yes they will. Second example, will you see your family soon? No, I won't see my family soon. Now the first one, will you graduate next year? No, I won't. No, I won't. Yeah, yes, I will. You can say according to your situation. Will your parent visit you next month? Yes, they will. Yes, they will. Yeah. Similarly, third one, will your friend invite you to a movies tomorrow? Yes, they will. No, they won't. Good. Now, four number. Will your teacher give you homework tonight? Yes, they will. Yes, he will. If the teacher is female, so yes, she will. Right? Your teacher mean maybe male or female. Five number. Will your friend have dinner with you tomorrow night? No, he won't. Good. No, he won't. Six number. Will we go shopping on Saturday? Yes, we will. Yes, we will. Good. Seven number. Will I see you on Sunday? Yes, you will. Good. Yes, you will. Yeah, no, you won't. Similarly, eight number. Will you be at the library Friday night? No, Good. Now, next one, nine number. Will we get a new book next week? yes, we will.
Good. And the last one is, will I have time to finish my homework this afternoon? Yes, you will. Good. And there are some other question also in the practice 15. Let's do it as well. I will say the example. You will answer me first of all. Will Christina meet Gino's parent? Yes, she will. She will visit them and get at him. Good. Now the first one. Will Adela get a job? Yes, she will. She will go with the Good. Yes, she will. She will work as a computer programmer. First of all, dear viewer, you will say well completely when you give short answer. Yes, she will. Yes, she will ना कहेंगे. Yes, she will. क्योंकि यहाँ इस पर आप इस पर वक्फा करते हैं एंड देन शील व्हेन इसके बाद कुछ और अल्फाज हो सो शील वर्क एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर. देयर आर 3 टाइप ऑफ आंसर. One is short answer. One is what answer? Short. The second one is moderate. What is the second one? Moderate. And the third one is long. So short is that will you go to school tomorrow? Yes. जब आप yes कहे तो ये short answer है. या जब आप सिर्फ no कहे no. Right? And will you go to school tomorrow? So yes I will. Yes I will. ये moderate answer है दरमियानी. Yes I will. तो यह वेल पूरा कहेंगे एल न कहेंगे. येस आई वेल या क्या कहेंगे? नो आई वॉन्ट. नो आई वॉन्ट या येस आई विल. और तीसरा क्वेश्चन लॉन्ग है तो लॉन्ग विल यू प्ले क्रिकेट टमारो? येस आई विल प्ले क्रिकेट टमारो. ये लॉन्ग आंसर है. या नो आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट टमारो. तो ये लॉन्ग आंसर है जब कंप्लीट सेंटेंस कहा जाए. सो द ग्रामेरियन से और द नेटिव स्पीकर से दैट द बेस्ट आंसर इज द मॉडरेट आंसर. द बेस्ट वन इज विच वन? द मॉडरेट. द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो से दैट खैरुल उमूरी औसतुहा. कामों में बेहतरीन काम वो है जो दरमियानी हो. किसी भी तरफ एक्सट्रीमिज़म को नहीं जानी चाहिए या तो मॉडरेट वाला आंसर इज़ द बेस्ट वन. तो when you give moderate answer then you will use will in the strong form, not the weak form. All the auxiliary verb have 2 form. One is weak, one is strong. Weak when we use the contraction form, that is called weak form. For example, he is my teacher. He is my teacher, so he is my teacher. Is he a teacher? Yes, he is. फिर एज पूरा करें कहेंगे. सिमिलरली जो मॉडरेट आंसर है इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट या स्ट्रांग फॉर्म में भूलेंगे. या यहाँ हियर आते हैं ब्रदर फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. सेकंड एग्जाम्पल की तरफ. विल सैम एंड बॉब प्ले सॉकर नेक्स्ट वीक? गुड. येस दे विल. दे विल प्ले इन द पार्क. नाउ यू आस्क मी द थर्ड क्वेश्चन. No, he won't. He'll go next year. Fourth number. Yes, he will. He'll probably win a medal. 5 number. No, it won't. It'll have a lot of hard question. No, it won't. It'll be rainy and muddy. Yes, you will. You will be a millionaire. Yes, you will. You will go to school on time. No, it won't. It will have a lot of difficult question. Will Bilal be famous in 2022? No, he won't. He'll be a student in 2022. He'll become famous in 2030 when he will become a famous doctor, engineer, professor, etc. Scholar, right? So, dear viewer, try to read it again and again. And similarly, the third interaction also, I will ask you question, you will answer me. Will you be at the game tomorrow? Yes, I'll see you there. Good. Yes, I'll see you there. Yeah, will be at the school tomorrow? No, I won't. I have to. God, no, I won't. I have to go to the doctor. I have a doctor appointment. राइट. तो किसी भी काम के जाने या न जाने के लिए भी आप वेल यूज़ कर लेंगे. द समरी ऑफ द होल डिस्कशन इज दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर यू विल यूज़ वेल. If the answer is in positive form, so the answer will be in will. If it is in negative form, then the answer will be in won't form.
Okay, I hope you will have learned these things. Try to read it again and again, and if there is some difficulties to you, it means you don't have complete command on level 1 2 special grammar, for example tenses etc. You don't have command upon them, so try to watch them as well and try to learn them as well, right? And try to share all these things with your near and dear one. Thank you so much. Khuda Hafiz.